Good afternoon, everyone. I welcome you to the 8th edition of the spiritual retreat. Before we begin this spiritual retreat, we had a small ritual that just sprung up, and we thought it would be the best way to start. So, ma'am, if you could start it with the same Josh. Yes. How's the Josh? How's the Josh? Vande Mataram. Vande Vande ये हुई ना बात, इसको जोश कहते हैं. अच्छा ये बताइए, आप लोग सबको अपने बच्चों से सुनने मिला होगा व्हाट दे आर लर्निंग हियर, हाउ दे फेल्ट. तो आप लोग खुश हैं ना? आप लोग सब खुश हैं ना? ये बता दूं आपको कि आपके बच्चों ने हमें बहुत रुलाया. आप हंस रहे हैं? मैं कह रही हूँ मुझे रुलाया, आप सब हंस रहे हैं. ये तो पूछिए क्या गलती करी, कैसे रुलाया, ये नहीं पूछेंगे. सुख के आंसुओं से इतना रुलाया, इतना रुलाया, इतना रुलाया, इतना सुख, इतना सुख, इतना सुख. श्री अरबिंदो बोलते थे कि एवोल्यूशन होगा, रैपिडली होगा, पर किताबों में पढ़ना अलग बात है, पर जब खुद अपनी आँखों से देखो, अपने सोल से विटनेस करो, इट्स अनदर एक्सपीरियंस. आपके बच्चे अनबिलीवेबल हीरे हैं जिनको आप लोगों ने बहुत सुंदर तराशा है, और थैंक यू हम लोग को देने के लिए, जिससे थोड़ा सा काम हम लोग भी उसके ऊपर कर दें. थैंक यू. आई वोंट कम इन बिटवीन नाउ, and please start the program. We can't wait for it. Thank you. I welcome you all on behalf of our chairperson, Anjali Jaipuria ma'am, our principal, Promini ma'am, and all my esteemed guests and school heads. Can we have a huge round of applause just to... Thanks. So every spiritual retreat, something new comes up. And this year we decided to go to our roots. We have dwelled into so many different aspects of spirituality, but I think in these 8 years we forgot to begin with the roots. So our focus this year was to talk about the Vedas, was to talk about the Upanishads. And our esteemed speaker, our facilitator, Dr. Sampanathan Sirji, he was there. He is a renowned Sanskrit scholar, so has received great awards. And with such grace and such simplicity, he gave his lectures. We also had Vinod Solanki ma'am, who is, I like to call, the extended family member of the Jaipuria family. And she took a very, very beautiful, enlightening session of Savitri. And based on all of these sessions, our students have prepared small presentations. Whatever their understanding, their takeaways were from that. And we would like to begin with a dance performance based on the passages of Savitri. Savitri, life is God's plan. This world was not built with random bricks of chance. A blind God is not destiny's architect. A conscious power has drawn the plan of life. There is meaning in each curve and line. It is an architecture high and grand by many, named and nameless masons, built in which unseeing hands obey the unseen. And of its master builders, she is one. Life is not a product of chance or randomness, but rather a deliberate plan designed by conscious power. The universe and human existence have a deeper meaning and purpose. With every aspect, unseen forces and individuals, like skilled masons, work together to build this grand architecture, guided by a higher intelligence. Savitri herself is a portrait as one of the master builders, contributing to the realization of this divine plan. Have we come on earth only for this? Oh, force-compelled, fate-driven, earth-born race.
O petty adventurers in an infinite world and prisoners of a dwarf humanity, how long will you tread the circling tracks of mind around your little self and petty things? But not for a changeless littleness were you meant. Not for vain repetition were you built. Out of the immortal substance you were made. Humans are not meant for mundane, repetitive lives, but rather for a greater purpose. We are made from the substance of the immortal and have the potential to become vessels for the divine. A seer and a creator within us awaits to unfold, and we have the power to transcend our limitations and achieve a higher destiny. By tapping into the almighty powers within nature, we can become the authors of a profound transformation, meeting the divine within ourselves and manifesting the infinite in our lives. We are called to embark on a quest to realize our true potential and become co-creators with the universe. Task all alone by ourselves? No, God is always there, in and around us. An outstretched hand is felt upon our lives. It is near us in unnumbered bodies and births. In a small, fragile seed, a great tree lurks. In a tiny gene, a thinking being is shut. The infinite holds the finite in its arms. Time travels towards the revealed eternity. That's right. But what's the process to aspire and connect with the divine within? Let me answer your question. To connect with that divinity, we are to start with silence and follow it by surrendering ourselves. We don't have to undertake this journey alone. God is always present, guiding and supporting us. The divine hand is felt upon our lives, keeping us safe and guiding us towards the ultimate goal of consciousness, immortality and Godhead. Our imperfections are not permanent, but rather a stage in our growth towards perfection, just as a seed contains the potential for a great tree, and a gene holds the blueprint for a thinking being. We too have the potential for divinity within us. The journey may be slow, but the infinite is holding the finite, and the time is moving towards the revelation of eternity.
ray of divine glory descends, communing with the individual and leaving a profound impact on their lives. The inner lamps are lit, and the Spirit is able to access deeper truths and experiences, transforming the individual in the process. There is a divine will that wants to manifest itself in physical life. Our aim is to discover that divine will and to work for its manifestation in physical life. The Mother. I saw them cross the twilight of an age, the sun-eyed children of a marvelous dawn, the great creators with wide brows of calm, the massive barrier breakers of the world. A divine force shall flow through tissue and cell and take charge of breath and speech and act, and all the thoughts shall be a glow of suns, and every feeling a celestial thrill. Nature shall live to manifest the secret God. The Spirit shall take up the human play. This earthly life must become the life divine. Sri Aurobindo's prophecy for humanity envisions a future where a divine force will transform every aspect of human life, illuminating the thoughts and feelings. A lustrous inner dawn shall awaken the mind, bringing bliss and a mightier presence of the divine. Ultimately, human life shall become divine, and the Spirit shall fully express itself, manifesting the secret God within. Transformation shall elevate earthly existence to a higher plane of consciousness. Beautiful start with that Shanknath to our spiritual retreat. We should begin with the presentations. This year, Dr. Sampadanand sir, he taught us a very, very important thing that even for me, I believe was life-changing. And he said that you must take a sankalp. He has urged all our students to take any sankalp. It may be small, big, anything, and follow that. And from Anjali ma'am and her sessions over the years, we have learned remember, offer, and invite. I would like to ask our guests some questions. And these questions have come up with our students, some of our own. Vinod ma'am, if you'd allow us, I'd like to begin with you. We have observed that you have a great memory, both of you, sir. And we want to know how we can instill that in our students and in ourselves also, so that we can give our best to students. For me, everything is God's gift. I don't think that I have inculcated it. It's something very natural. Health, memory, human birth, everything is natural, a divine gift. If I can just feel where Vinodji gets the memory from the little lens that I have inside her life, because we've stayed together for a few days,
2-3 times in Pondicherry. She reads a lot. And she has carved out time for a reading which nobody can take away from her. So, and that reading she does, mark करके, underline करके, दोबारा पढ़ के बहुत शिद्दत से पढ़ाई करती है. तो इतना जो पढ़ेगा उसके And with alertness, with complete consciousness. So I hope think, parents, you're taking notes. I think, yeah, that sincerity. Thank you so much, ma'am. Sir, any tip that you have to help our children? One of the main reasons that children often bring up here, that we have come here to improve our concentration. We want to improve our focus. And they often ask questions on the same thing, that how can we improve our concentration? How can we improve our memory? Any tip or any insight you have on that? Okay, thank you. So, as I had mentioned about and then introduced this 1 minute silence, so that needs to be practiced for everything. Eating, sitting, doing any work before going to sleep. That's one activity one has to continue. Then have some music in life always. Some chanting of the mantra, yoga, pranayama, everything helps in bringing the concentration. And specifically, if you have a particular time during a particular time, if you can listen to something or recite something, practice some mantras, that helps immensely. That's what helped me. So mantra yoga is a very powerful tool for bringing focus, concentration. With this, the first group brings their presentation, तेरा तुझको अर्पण. छात्रों की इस प्रस्तुति के माध्यम से हम ये जानेंगे कि किस प्रकार हमें अपने चंचल मन को शुभ संकल्प के प्रति लगाते हुए सभी कार्यों को भगवान को समर्पित करना है. यह सभी उपस्थित ग्राहकों को हम सबका वंदे मातरम. इस प्रस्तुति के माध्यम से हम यह जानेंगे कि किस प्रकार हम अपने चंचल मन को शुभ संकल्प के पास ले जाते हुए अपने सारे कार्य भगवान को समर्पित करते हैं. वंदे मातरम. वंदे मातरम महोदय. आज हम सभी यजाग्रतो मंत्र का उच्चारण करेंगे. यजाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तदो सुप्तस्य तथैवैति दूरं गमन् ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु. उपविशन्तु. आज हम इस मंत्र का अर्थ जानेंगे. आन्या, तुम कहाँ खो गई? आन्या, उठो. आन्या, तुम्हारा मन कहाँ चला गया? मैम, मेरा मन आज रात को मेरी दोस्त की पार्टी में कौन सी ड्रेस पहनूं वहाँ चला गया था. शनाया, सोते सोते भी कहाँ इसका मन पहुँच गया? यह हंस रही है. शनाया, उठो. शनाया, तुम्हारा मन कहाँ चला गया? मैम, वो मेरे मामा लंदन में रहते हैं ना, तो मैं उनके घर खेल रही थी. देखो, मन जागते हुए दूर तक पहुंचता है और सोते हुए भी दूर तक चला जाता है. अब दक्षिता कहाँ खो गई? दक्षिता, अब तुम्हारा मन कहाँ चला गया था? मैम, मैंने 3 दिन पहले श्री अरविंद की जो मूवी देखी थी, मेरा मन वहीं खो गया. जैसे श्री अरविंद सारे प्राणियों, सारे कैदियों में के अंदर ईश्वर को देख रहे थे, मुझे भी वैसा ही बनना है, सारे लोगों से प्रेम करना है. उत्तम दक्षिता, इसे कहते हैं शुभ संकल्प. मन हमेशा यहाँ वहाँ तो चला जाता है, पर जाए तो केवल अच्छे अच्छे विचारों के प्रति. देखो बच्चे, आन्या का मन जाते हुए भी पार्टी में चला गया और शनाया का मन सोते सोते लंदन चला गया. दक्षिता का मन बैठे बैठे महर्षि अरविंद जी के मूवी में चला गया. और इसके मन में कितने अच्छे शुभ संकल्प उठ रहे थे कि मुझे भी महर्षि अरविंद जी के तरह बनना है. मैं अर्थ कहूँगी और सभी दोहराएंगे. हे ईश्वर मेरा मन, हे ईश्वर मेरा मन, जो जागते हुए दूर तक पहुँचता है, जो जागते हुए
दूर तक पहुंचता है और सोते हुए भी दूर तक चला जाता है। और सोते हुए भी दूर तक चला जाता है। वह ज्योति स्वरूप मेरा मन, वह ज्योति स्वरूप मेरा मन शुभ संकल्प करने वाला हो, शुभ संकल्प करने वाला हो। मैम, ये कौन से वेद का है? यह मंत्र शुक्ल यजुर्वेद के 34वें अध्याय का पहला मंत्र है। मैम, वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका शब्दार्थ याद हुआ था ना सबको? हाँ मैम। एक बार एक एक करके सब बताएंगे। यत अर्थात जो, जाग्रतो, जाग्रतः भी कह सकते हैं, अर्थात जागते हुए। दूरम अर्थात दूर तक। उदयति अर्थात पहुंचता है। देवम अर्थात दिव्य। तदु अर्थात वो भी। सुप्तस्य अर्थात सोते हुए। दूरंगमम अर्थात दूरगामी। तथै प्रति अर्थात वैसे ही जाते हैं। ज्योति श्याम एकम ज्योति अर्थात सभी ज्योतियों में जो एक हो। मे तत् मनः अर्थात ऐसा मेरा मन। शिव संकल्प अस्तु अर्थात शुभ संकल्प युक्त होवे। उत्तमम। सभी मिलकर एक बार और मंत्र दोहराएंगे ताकि सबको यह याद हो जाए। ओम यजाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदो सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषान् ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब प्रस्तुत है एक और संवाद जो कि ईश्वर को हर कार्य अर्पण करने पर आधारित है। मन में हमेशा शुभ संकल्प हो। समझ में आई बात? हाँ मैम, पर शुभ संकल्प हो इसके लिए क्या करना चाहिए? कैसे मन को यह आदत दिलवा सकते हैं? बेटा, हर कार्य में हमेशा ईश्वर को अर्पण करना होगा। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 37वां श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, सभी दोहराएं। यत् करोषि यदस्नासि, यज्जुहोषि ददासि यत्, यत् तपस्यसि कौन्तेय, तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत् कुरुष्व अर्थात तू जो कुछ करता है, यह देखें, व्यायाम करता है, परमार्थिक करता है, सेवा व्यवहारिक या पढ़ाई। हे ईश्वर, मैं जो कुछ करता हूँ वो सब आपको अर्पण करता हूँ। यदस्नासि जो कुछ भोजन खाता है, त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। हे ईश्वर, आपकी वस्तु आप ही को अर्पण। यज्जुहोषि तो जो कुछ यज्ञ करता है। हे ईश्वर, यह आपकी वस्तु है, यह आप ही को अर्पण। ददासियत तो जो कुछ दान करता है। ईश्वर, आप देने वाले हैं, आप ही देने वाले हैं, आप ही दिलाने वाले हैं, आप ही करने वाले हैं, आप ही कराने वाले हैं। यह तपस्यसि तो जो कुछ तप करता है, अपने शरीर को अच्छे कामों में लगाना, परिश्रम करना। छात्राणाम अध्ययनं तपः अर्थात छात्रों के लिए अध्ययन ही तपस्या है। इसको हम विस्तार में लेकर एक कहानी के द्वारा प्रस्तुत करेंगे। इस कहानी में दो बहनें हैं, एक का नाम मिताक्षी है और एक का नाम आरना है। एक दिन दोनों बहनें जब सो रही हैं तब उनकी माँ उन्हें उठाने आती है। मिताक्षी, उठो बेटा।
आरना उठो बेटा। मिताक्षी तुरंत उठ जाती है, कराग्रे कर कर, फिर धरती को प्रणाम कर, पानी पीकर और अपनी नित्य क्रिया करने के बाद वो योग करने चली जाती है। माँ, मैं योग करने जा रही हूँ। आरना उठो बेटा, देखो मिताक्षी योगा करने गई। मिताक्षी योगा करके वापस आ जाती है। आरना उठो बेटा, देखो मिताक्षी योगा करके भी आ गई। उनकी माँ उनके लिए जलपान लेके आती है और दोनों बहनों को दे देती है। मिताक्षी विद्यालय जाती है। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। अर्थात हे ईश्वर, आपकी वस्तु है, आप ही को अर्पण करना है। मिताक्षी विद्यालय जाती है। पढ़ाई करने से पहले अर्पण करके ही पढ़ाई का आरंभ करती है और दूसरा कालांश आरंभ होने से पहले भी और अंत में अर्पण करना उसका अभ्यास था। विद्यालय के बाद गीता कक्षा जाती है और उसके बाद खेल करने जाती है। फिर घर जाकर हाथ पैर धुलकर जब भोजन करने बैठती है तब, बेटा ईश्वर की पूजा तो करो, सिर्फ पढ़ाई और स्पोर्ट्स खेलती हो, पूजा भी तो करो। माँ, मेरी अध्यापिका ने मुझे बताया है, छात्राणाम अध्ययनम तपः, अर्थात छात्रों के लिए अध्ययन ही तपस्या है। ईश्वर तो मूर्ति के रूप में बाहर तो है ही, किंतु मेरे भीतर मेरे साथ भी तो है। बिना अर्पण किए, बिना उन्हें बताए मैं कोई कार्य प्रारंभ नहीं करती हूँ। माँ, मैं तो 24 घंटे पूजा करती हूँ। अब एक दिन देखते हैं क्या हुआ। माँ, मेरी कक्षा में प्रथम स्थान आया है। बेटा तुमने बहुत अच्छी बात की है। बेटा पूजा करने के कारण तुम्हारी रैंक भी अच्छी हो रही है और तुम्हारे जीवन अच्छा हो रहा है। अब आप सबकी समझ में आ गया होगा कि भगवान को अर्पण करना कितना लाभ है। हाँ मैम, मैं समझ गई। छोटे से छोटे कार्य को भी यज्ञ की आहुति के रूप में अपनी आत्मा को अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से प्राणी अपने भीतर छिपे हुए ईश्वर तत्व को से बार बार जब संपर्क करेगा, तब धीरे धीरे उस ईश्वर तत्व की उपस्थिति का आभास उसे होने लगेगा। उत्तम काशवी, तो अब हम सब इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। धन्यवाद। Well, we learned that we will offer everything to the God. और आज ही मैं अपनी एक कॉलीग से बात कर रही थी and I really liked what she said. She said, जो भगवान को ऑफर कर दिया तो फिर किस बात की चिंता। So I think with this spirit, I invite our second group. In spite of imperfections, each individual has a spark to evolve into luminous beings. Presenting to you, man, thou art infinite. Vande Mataram students, please sit down. Everyone open to page number 80. Everyone prepare well for your exams. Good luck.
for my exams. This is so hard, I can't concentrate. Vande Mataram students, please sit down. Give everyone their test papers. You may start writing. Sir, here it is written that Narayan Murthy was disappointed, but in the chapter he was actually happy. It is a true-false question. Have you done your test? Whoever has done the test, you may leave. Time's up. Sir, please give me 5 more minutes. Okay. Time's up. No. What will my result be? How will be my result? What will be my result? I can't concentrate. I can't be like them. I'll never be like them. They're just so much better. Oh Lord, please, someone, help me. Everyone, take your results. Whoever has seen the results, you may leave. What happened? You seem anxious. I can't do this. I'm never able to concentrate, and no matter how much I try, I can't. I insist you join the spiritual retreat. It will help you. Vande Mataram, everybody. I am Arsh Ali Khan of class 6C, and I am here to welcome you for the 8th edition of Spiritual Retreat. We are going to learn about human and animal consciousness. Are there any queries before we start? Yes? Vande Mataram, sir. Sir, what is the difference between animal consciousness and human consciousness?
A good question. Let me tell you this by a short story of the sage and the animals. Sir, all these animals are having a debate that animal consciousness is higher than human consciousness. We animals are used as vahans of gods and goddesses. I am the lion, sir, and I am the king of the jungle. Well, he's saying he's the lion, the king of the jungle. I am the dog. I am the human's friend. And if they insult me 1,000 times and just give me a piece of bread, I will become their loyal friend. Well, he's saying he's our furry friend, the dog, and he will always stay loyal to us. I am the peacock. I am the Vahan of Lord Karthik. Many people use my feathers as a decorative item and decorate their homes, and I dance beautifully whenever it rains. Well, he's saying he's the peacock. He dances very beautifully in rain. Me, the tiger. Who needs my introduction? I am the Vahan of Ma Durga. And after my death, people use my skin in many ways, like to make asan of tiger skin and many more. Well, he's saying he's the tiger, the Vahan of Ma Durga. I am the swan. I am the Vahan of Ma Saraswati. Well, he is the swan. He is the Vahan of Ma Saraswati. Well, sir, all these animals conclude that animal consciousness is higher than human consciousness. Well, my dear animals, I agree with all of you. But there is one problem. And what is that, sir? That you animals have fixed quality. And if one animal has some quality, then all the animals of the same kind will have the exact same quality. But the humans can manifest any quality and transform themselves into higher being through intense sadhana and tapasya. Sorry, sir. We have misunderstanding. So now you know, Rohan, how human consciousness is greater than animal consciousness. Yes, sir. Thank you. Are there any more queries? Sir. Yes. Vande Mataram, sir. I am Avyanaran of class 8D. Sir, no matter how much I try, I cannot concentrate. I always try my best, but it just doesn't work out for me. So, can you please answer my question that how the human consciousness can be applied in real life? A great question again. You can apply human consciousness in your own life by meditating and reciting the mantras of the Bhagavad Gita. The most prominent mantra to get the meaning of life is Manmana Bhava Mad Bhakto Madhyaji Mam Namaskuru Mame Veshyasi Satyam Te प्रतिजाने प्रियोसी में। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अपना मन मुझ में व्याकुल करो, हृदय से मेरे बन जाओ, अपने मन वचन कर्म जीवन के प्रत्येक कार्य ऐसे करो जैसे तुम यज्ञ में मुझे आहुति दे रहे हो। तुम निरंतर प्रयास करो, ऐसा करने से तुम मेरे हो जाओगे। यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। Have you all understood this? Yes, sir. Oh well, I have a suggestion for you that you take the Bhagavad Gita and know and understand the meaning of life. Thank you, sir.
ideas that we are watching, that our kids are learning, that we as teachers are learning here at St. Amar Jaipuria, they are all because of Sri Aurobindo and the mother's ideology. And even though they are not with us, there is Sampananand sir will tell us about his AI search engine, Incarnate Word. Sir, would you like to please tell us about? Here, the incarnateword.in, this website team, has now developed this page, the AI assistant, for any question you can ask to Sri Aurobindo and the mother. So you can select the book collection to search. Either you can select all the works of Sri Aurobindo and the mother, or you can select specific books, or only Sri Aurobindo's work, or only the mother's work. So let's select all books. Yeah. Now we can ask question. Anyone who would like to ask a question, then we will write that prompt there, and let's see what Sri Aurobindo has to say. Please explain the meaning of surrender. So you have this text now explaining you the meaning of surrender, and the words are taken directly from the writings of Sri Aurobindo and the mother. So you can go ahead with these words, because these are not generated by any other machine, but it's directly pulled from their writings and then presented to you. So authenticity and rigor is maintained. Right, happiness. मेरी माय गॉड ओके ये देखिए कितना कुछ हैप्पीनेस पे एंड इन द वर्ड्स ऑफ श्री अरबिंदो एंड द मदर विद द रेफरेंसेस CWM or CWSM or agenda. Yeah, the same way, please once again go for the anger part. कितना just see how much is written on anger. See here you have all the answers like nature of anger, how to control, how to overcome anger. And the beauty is that it pulls out the passages and then gives you the reference. You can click on the reference to go in detail. Yeah. Difference between man and God. So it looks at the various dimensions and then pulls out the passages accordingly. Like a simple question was difference between man and God. Then it speaks about the very nature, the evolutionary process, the essential nature, consciousness. So where lies the difference between like evolutionary perspective, relationship, potential for transformation, unity and multiplicity, purpose. Okay. Yeah. So various angles. It gives you the answer to show you the difference between man and God, all in the light of Sri Aurobindo and the mother. Purpose of life. So here again, like you have the answer from various angles. So the evolution of consciousness, integral transformation, manifestation of the divine. So these are the higher purposes of life. Discover of the psychic being, living the life divine. Then practical application, you have aspiration, self-perfection, service, surrender. So this is how you can use this AI tool to get answers from Sri Aurobindo and the mother. Thank you. Thank you so much, sir. Please remember incarnateword.in.
the spiritual retreat doesn't end with us here. We have Sri Aurobindo and the mother to guide us online as well now. Thank you, sir. All right, so Jaipurya ki virasat Sri Aurobindo, at least we have taken Sri Aurobindo and the mother, and हमारे culture की विरासत Vedas. So presenting to you the next group, वेदों की अमूल्य विरासत. Vande Mataram, everyone. In the dawn of civilization, when the universe was still unfolding its secrets, the ancient Indians sought to understand the mysteries of existence. Their quest for knowledge and wisdom gave birth to the Vedas. Join us today on a journey through the Vedas as we delve into the wisdom and traditions that shaped ancient Indian culture and continue to inspire us today. नारायण 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 नारायण। आज मैं आपको सुनाने आया हूँ एक दिव्य गाथा वेदों की अमूल्य विरासत की। वेद जो ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रकट हुए और ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाते हैं। तो चलिए चलते हैं ब्रह्मलोक की ओर। हे ब्रह्मदेव, सृष्टि का आरंभ तो हो रहा है, पर ज्ञान के बिना यह अधूरा है। सत्य कहा देवी, मैं वेदों का सृजन कर रहा हूँ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जाओ, सृष्टि में अपना ज्ञान फैलाओ। वत्स, वेद स्वरूप छात्र अपना परिचय दें। मैं ऋग्वेद, स्तुति, प्रार्थना और प्रकृति उपासना का मार्गदर्शक। मैं यजुर्वेद, यज्ञ, नियम और कर्तव्य का ज्ञान देता हूँ। मैं सामवेद, संगीत और कला का स्रोत, आत्मा को शांति देने वाला। मैं अथर्ववेद, चिकित्सा, नीति, वास्तु एवं मनोविज्ञान सब मेरे ही अंग हैं। पर गुरुजी, ये सब तो प्राचीन बातें हैं। इस नए विज्ञान के युग में इनका क्या उपयोग है? बिल्कुल उचित प्रश्न है वत्स। आओ मैं बताता हूँ। वेद कोई बीते युग की बातें नहीं है, बल्कि शाश्वत सत्य है। आज की जीवन शैली में इनके सिद्धांत पूरी तरह से लागू होते हैं। तो ऋग्वेद, आप अपने बारे में कुछ गुण बताइए। मैं सिखाता हूँ कि प्रकृति की पूजा करो। आज जब हम पर्यावरण संकट से घिरे हुए हैं, तब मेरी यह भावना पूरे ब्रह्मांड के लिए अत्यंत आवश्यक है। अति उत्तम ऋग्वेद। अब यजुर्वेद, आप अपने बारे में बताइए। कर्म ही पूजा है। आज की मशीनों की दुनिया में भी यदि हम अपने कार्य को यज्ञ समझेंगे तो जीवन में संतुलन आएगा, जरूर आएगा। बहुत सुंदर। अब सामवेद, आप अपने विचार बताइए। संगीत जो आत्मा को शांति दे वह मुझसे आया। आज भी संगीत थेरेपी का उपयोग मानसिक स्वास्थ्य के लिए होता है। बहुत सुंदर। अब अथर्ववेद, आप अपने बारे में बताइए। मैं तो आज के वैज्ञानिक युग से भी आगे हूँ। औषधियाँ, तंत्र, विद्या, मनोविज्ञान सबका भंडार मैं ही हूँ। धन्यवाद। आशा है कि आपकी शंका का समाधान हो गया होगा। जी गुरुजी, मैंने समझा कि वेद पढ़ने के लिए वस्तु नहीं, बल्कि जीवन की एक कला है। जो इन सिद्धांतों को अपनाते हैं, उनका जीवन उन्नत हो जाता है। नारायण नारायण। लेकिन विद्या वही है जहाँ अहंकार नष्ट हो। आइए सुनाता हूँ एक गाथा। एक बार असुरों को हराकर देवता गर्वित हुए। तभी ब्रह्मा जी ने देवताओं की परीक्षा ली। एक रहस्यमय यक्ष प्रकट हुआ। तुम कौन हो? मैं अग्नि, मैं सब कुछ जला सकता हूँ। अच्छा, तो ये तिनका जला के दिखाओ। तुम कौन हो? मैं वायुदेव, मैं कुछ भी उड़ा सकता हूँ। अच्छा, तो ये तिनका उड़ा के दिखाओ। यह यक्ष कौन था? वह ब्रह्म था। वही असुरों पर विजय का कारण था। ज्ञान और नम्रता ही ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग है।
समिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य इणस्पदे समित्यसे सनो वसून्या परा संगच्छध्वं संवदध्वं संवोमनांसि जानतां देवा भागै यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रसमिति समानी समानं मनसः चित्तमे एषां समानं मंत्रमभिमन्त्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि समानीव आकूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वस्तु सहासति। वत्स, ब्रह्म ज्ञान वही है जो विनम्रता से उत्पन्न होता है। वेदों को समझने के लिए हमें वेदों में ही जीवन खोजना होगा। वेदों से सीखे सच्चाई, कर्म, स्वास्थ्य और संगीत, यही है हमारी भारतीय विरासत की आत्मा। वेद ज्ञान की धारा है, जीवन जीने का सहारा है। सदियों से जो जीने दीप जलाए फैला हुआ उजाला है। नारायण नारायण, जहाँ वेद है वहाँ ही उजाला है। लय पाहि परिपालय परमेशि कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंसवे करुणाम्बुरासि धीं तारा जतुलतो गानमे नाट्यं चेसे गतुलतो नाम शतं मूल नतुलतो नापैननी चुपुआ बेला ना आलोचने నిరంతరం నీకు నివాళి నివ్వాలని నాలో ఆవేదనే నువ్వు ఆదరించేలా నివేదనవ్వాలని తానా ధీం ధీం తానా జతులతో ప్రాణమే నాట్యం చేసే గతులతో శతం మూల నతులతో నాపైన నీ చూపు ఆపేలా. Absolutely stunning that was, wasn't it? While I was watching that script of Vedas, a question popped into my mind since we have Nautyal sir, who's a scientist. Sir, I wanted to ask you, what is the difference between science and religion? Spirituality. Spirituality begins where science ends. Science appeals to our consciousness, which is with the living world. But I think spirituality goes far beyond that. So I think in the normal life, we may not be directly feeling that. We are dealing with material world. But when it comes to thinking, when it comes to feelings, when it comes to the real purpose of life, then it's the spirituality. And I don't see any contradiction between the two. I mean, a man can be a scientist and a spiritual at the same time. I sometimes give an example. There is something called integral calculus. If there is a curve and we want to calculate the area under the curve, then there are two ways. One is the brute force method. You divide that space into very, very fine strips. You take the width of that strip, multiply by the height, and that way you calculate the area under the curve. And second one is go for the analytical method. You have x dx, you integrate it, x square by 2 it comes. You put those values and you get the value which is exact. Whereas the first one was approximation. So perhaps first one was the scientific approach and the second one is the spiritual approach. You reach the conclusion straight away with much
better accuracy than your scientific methods. And then when we have in the Hanuman Chalisa, which is written how many thousands of years, the distance between the sun and the earth, and it's to the point, and they didn't have any measurement tools or theorems, but it was a discovery of the soul. The soul knew, it knew things because the soul was connected to the divine, and the divine is omniscient. So that is the difference I find between science and spirituality. I would like to quote the example of Ramanujan. I don't know what the real thing is. Ramanujan, one of the greatest mathematicians of this world, what he would say, Ramanujan was a great mathematician. He has given many of the theorems which scientists or mathematicians all over the world, they have not been able to prove. There are many of them. He used to say that the theorem comes to my mind, not to my conscious mind. I mean, this is what he used to say, that Devi gives me darshan during the night time. She comes in my dream. She tells me something. I wake up and write it down on papers. And in the morning, I say that this is a theorem. Don't ask me how I got it. Even today, there are many, many theorems given by Ramanujan. In the same manner, there is a diary of Ramanujan where there are a lot of theorems given without proof. And people have not been able to find a proof for that. Many of them have been proved to be true. So this is something which he achieved or which he arrived at using his subconscious mind or something, but it was not by the... It's like sometimes you are trying with that 1 megabyte per second kind of a connection, and slowly things are trickling in. But then in one moment, you realize the whole thing. So this is, I think, what is spirituality. You reach at the complete without going through the process which we usually follow in science or in the daily world. So this is something I think we are very, very far from understanding how human consciousness or human mind works. Every year there is a conference generally in the United States, but now this has been happening everywhere in the world. It was started by the University of Arizona, and every year there is a conference where they discuss consciousness. And the people who participate are not, the people with the small knowledge bank and all. Many of them are Nobel laureates. They discuss consciousness, and I am sure that the conference will go on for many years before any final concrete conclusions are arrived at. It's not that there is a difference, it's a convergence. In a way, it's a convergence. It is not that there is difference between science and spirituality. They definitely are convergent. They converge, but more and more people are seeing that convergence. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir, for that beautiful, beautiful insight. All right. I know I made you wait for the next one, but I'm telling you it is worth it. During our spiritual retreat, children saw a movie, Tales of Prison Life, based on Sri Aurobindo's life. In India's fight for freedom stood our beloved Sri Aurobindo, bold and wise. But prison turned his gaze from earth to skies. A moment of silence, a journey within. Here began the path where the light would begin. वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज हम सब महर्षि अरविंद के जीवन में घटित उस घटना के साक्षी बनेंगे जो हम सबको यह शिक्षा देता है कि किस प्रकार विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी हम उस परम तत्व से जुड़कर उसका साक्षात्कार कर सकते हैं और उस सर्वोच्च आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम दृश्य सन 1908 वंदे मातरम के उत्तर में।
मैं वंदे मातरम के दफ्तर में बैठा था, तभी मुजफ्फरपुर का एक टेलीग्राम मिला। पढ़कर मालूम हुआ कि मुजफ्फरपुर में बम फटा है, इसमें 2 मेमों की मृत्यु हो गई है। उसी दिन के अंग्रेजी अखबार एम्पायर में यह भी पढ़ा कि पुलिस कमिश्नर ने कहा है, हम जानते हैं इस हत्याकांड में किन किन का हाथ है और उन लोगों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। तब मैं यह नहीं जानता था कि मैं ही था उस संदेह का मुख्य निशाना, पुलिस की नजर में प्रधान हत्यारा। द्वितीय दृश्य, श्री अरबिंदो की गिरफ्तारी। कारावास में श्री अरविंद को बस एक कंबल, एक कटोरा और एक थाली दी गई थी। श्री अरविंद इसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनको एक कटोरा और एक थाली दी गई थी। उसी से ही उन्होंने मुंह धोया, स्नान किया और थोड़ी देर बाद उसी को शौच के लिए प्रयोग किया और फिर उसको धो के उसमें दाल डाली और तरकारी डाल के उसी में खा लिया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कारावास में न केवल श्री अरविंद को शारीरिक यातनाएं दी गई, अपितु साथ ही साथ उनको मानसिक आघात पहुंचाने के भी भरपूर प्रयास किया गया। परंतु इन सब के मध्य श्री अरविंद कह गए हैं कि यहाँ मुझ में और समाज के प्रतिष्ठित लोगों में कुछ भेद नहीं रखा गया। यह देख थोड़ा खुश हुआ। इस व्यवस्था ने मातृभक्ति में आहुति का कार्य किया। कारावास में श्री अरविंद ने स्वाध्याय को न रोकते हुए कागज, ध्वज, श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषद की मांग की। पुस्तक आने में जो समय लगा, उसमें मुझे निर्जन कारावास का महत्व समझने का और समय प्राप्त हुआ। कारावास में किसी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है और उन्माद भी हो सकता है, श्री अरविंद कहते हैं। प्रथम अवस्था में मन को शांत करने में कठिनाई का अनुभव हुआ एवं देह भी सुन्न पड़ गई और बुद्धि भी कार्य करना बंद कर चुकी थी एवं मन बहुत विचलित होने लगा। मैं मन को शांत नहीं कर पा रहा था और दिन प्रतिदिन मन विद्रोही होने लगा, हाहाकार करने लगा। यह अवस्था देख मैं आश्चर्यचकित रह गया। इस कारावास में मुझे अकेले रहना होगा। इंसान के लिए अकेले रहना कठिन कार्य है। एकांतवास में श्री अरबिंदो ने घटनाओं को देखकर साक्षात श्री कृष्ण का होने का अनुभव किया। उनको यह भी बोध हुआ कि संपूर्ण आत्मसमर्पण और निष्ठा ही तो सिद्धि पाने का एकमात्र काम है। इसलिए उनका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगा। धीरे धीरे जब मैं खुद को स्वाधीन महसूस करने लगा तो सर्वभूतों में श्री हरि का अनुभव करने लगा और मन ही मन सर्वम खलविदम ब्रह्म इस मंत्र का उच्चारण करने लगा। मुझे सभी अचेतनता में चेतना का भाव होने लगा और आत्मा सभी मोह माया का परित्याग करके उस आनंद का अनुभव करने लगी।
इस परम आनंद की अनुभूति में श्री अरविंद ने श्री कृष्ण को स्वयं बांसुरी बजाते हुए देखा और ऐसा लगा जैसे श्री कृष्ण बाल सखा के रूप में श्री अरविंद के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं। जैसे श्री कृष्ण स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप में श्री अरविंद को गले लगा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो श्री कृष्ण के प्रति यह मेरी भक्ति भावना का परिणाम है या उनकी मेरे प्रति विशेष अनुकंपा। इस प्रकार धीरे धीरे मन में शांति का अनुभव होने लगा एवं हृदय में प्रेम, दया, सात्विक भावनाएं जागृत होने लगी। निर्मल शांति भाव गंभीर हुआ। जब पुस्तकें आई मुझे उनकी आवश्यकता महसूस ही नहीं हुई और मन में आनंद के साथ साथ दृढ़ विश्वास उत्पन्न होने लगा। धीरे धीरे मुकदमे का दिन भी आ गया, परंतु श्री अरविंद के मन से मुकदमे का डर पहले ही खत्म हो चुका था। मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा चालू हुआ। चित्रंजन दास जो उनके मित्र थे वह उनके बचाव में आए। उनके आते ही मानो कि मुकदमे का धारा ही परिवर्तित हो गई। श्री अरविंद के राजनीतिक विचार उनके दार्शनिक विश्वास को प्रस्तुत करते हैं। वेदांत जिन आदर्शों को हमको सिखाता है यह उन्हीं आदर्शों को भारतीय समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरा मानना है कि इस वाद विवाद के खत्म हो जाने के बाद यह भारत देश में देशभक्ति के कवि के रूप में याद रखे जाएंगे। इस प्रकार चित्रंजन दास जी के तर्क को देखते हुए और सबूत के अभाव में श्री अरविंद को बाइज्जत बरी किया जाता है। मैं कारावास जीवन के 1 वर्ष बाद आध्यात्मिक क्रांति में जुट गया, जिसमें न केवल भारत के लक्ष्य की बल्कि पृथ्वी के भविष्य की बाजी लगी थी। The journey of life of Sri Aurobindo in the prison depicts that even the most painful trials can become instruments of inner awakening when embraced with faith and surrender to the divine. Sri Aurobindo's prison life was not a period of darkness, but a period of transformation. In solitude, through his inner communion, he talked to the divine and became a seeker of truth. What I learned from the life of Sri Aurobindo is that when we sincerely remember, invite and offer everything to the divine, our every outer imperfection and trial becomes a spiritual journey into raising our consciousness. Every avatar who comes into this world takes upon himself immense hardship, not for his own sake, but to show the right path to others. Sri Aurobindo to bore the trials of imprisonment for the humanity, to learn that the way to calm ourselves is to offer everything to the divine. This is the way to remain in joy irrespective of the situation around us. Through his many writings, such as The Light Divine and Savitri, he has gifted us the wisdom and the ultimate truth. He discovered that sincere connection to our inner divine, our inmost self, is the key to true transformation. अब मैं और मेरे मित्र आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करेंगे जो साक्षात कृष्ण जी को समर्पित है, और वो है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है।
काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. I had written a speech in this piece of paper, but I would not speak from this paper because I want to speak from within. I want to speak from a place I rarely touch, and that is my inner being. So, now the question arises, what we have learned from this retreat? I learned that we all have been born imperfect, with many defects. And our aim is to attain perfection, and that is what we call divinity. And to attain the same perfection, little by little, we have to remove our own mistakes and our own defects. And it is easier said than done. And for that part, in the Gita, there's a shlok of the second adhyay's 14th shlok and the 15th shlok which tells about the same. Matra sparsha stukonteya shitoshna sukha dukkhada agama paino nitya tansitishasva bharata. So this shlok tells us to continue in the part of perfection, to strive for perfection, even if there is cold or hot. Either it is harsh or it is good. We should continue in that part, and we should not overreact to the same. And the second shlok, which was Yamhina Vathayantete, which is the second adhyay's 15th shlok, tells us to remain constant in happiness and sadness. Samma sukha dukkhadam. And we don't have to get vyathit by them, and continue on the part of perfection. Now you must be thinking, you must have heard the word yogis, rishis, that they go on peaks. But in reality, the meaning of yogi has been defined in the Gita in 12th adhyay's 13th and 14th shlok, which tells that a real yogi is the one who removes the ego and who tries and strives for perfection and starts to remove all its defects. And you must have also heard the word rishi. Sampananand sir also told us the meaning of rishi. It comes from the root word rish. The meaning of rish is to move towards perfection, to strive towards perfection. And now, you must be thinking that I am speaking a lot. So now I will be telling my own defects and how I would be improving them. So first of all, in my physical self, I am very lazy. Okay, I am unable to wake up in the morning. My parents force me to go to the gym or go for swimming and do physical activities. I usually make excuses and run off. But now I'm taking sankalp, as Sampadanand sir said. We should take sankalps in our life, and I will work on my laziness by working out daily. So my sleep cycle will also not get disturbed. Now I would want to make a confession. I have only made 5 copies, and my 5 copies are incomplete because of my laziness. Now I'm making a sankalp that in a month I'll complete all those 5 copies which are incomplete and maintain my copy work. Because you may ask my subject teachers that my work is incomplete, but in reality I will now focus on my work and complete the copy work as well. Then coming to my vital self, I overreact sometimes. I can see my mother happily crying, but I overreact sometimes. That, for example, if a small thing happen, I shout or I overreact sometimes. So I would like to control my vital being, which is a Rajasic being, which is unstable, by thinking before I do something. And then my mental being, I am very egoistic and arrogant. So I realized something, that my arrogance is coming from an insecurity that I'm not doing something good. That's why, to protect that, I'm using my arrogance. So now I would not think of the result. I would not think of the phal. I will do the karma. And lastly, my mental being. I have a lot of fragmented and scattered thoughts. I would like to observe silence and meditate and concentrate them towards one. Thank you. Vande Mataram, everyone. So, before knowing who I am, you should know what I have become. I made 4 lines
for Anjali ma'am yesterday, what she has done to me, and I give all the credit to her and every single one of us who are there, all the teams, all the teachers, Romini ma'am, Sampadanand ji, and everyone who has contributed to making this event a successful event. आए थे कुछ और ही बन के, निकले हैं हम अलग ही राग में, कदम पड़ेंगे जहाँ भी अब, गाएंगे हम गीत आपके. Just like Arya Bhaiya mentioned, the major and the most important learning for me in this retreat was what Krishna said in the Bhagavad Gita. कर्म करो पार्थ, कर्म करो. उस फल की अपेक्षा छोड़ दो और कर्म पर ध्यान दो. उस कर्म में ही तुम्हें उस आनंद की प्राप्ति होगी और तुम सच्चित आनंद बन जाओगे. धन्यवाद. On mom's request, I am going to tell you a conversation between me and a voice in my mind. And some of you, as I mentioned yesterday also, some of you may find it fake or delusional, but it is what I heard from inside. Yesterday was a session of love baths, and I did not consider it would be very important for me. But as I went into the state of meditation, I heard a voice. The conversation was in my mother tongue. It was in my native language. I asked शंभू, क्या मैं सफल बन पाऊंगा शंभू? मुझे कोई उत्तर नहीं मिला. मैंने फिर प्रश्न किया, शंभू क्या आप मेरे पास हैं शंभू? मैं निरंतर प्रश्न करता गया और मुझे उत्तर मिला, तुम क्यों आयुष तुम हमेशा उस फल के पीछे भागते रहते हो, हमेशा उस चाह में पड़े रहते हो कि तुम्हें सबसे ऊपर जाना है. क्यों तुम बिना उस फल के सुख को प्राप्त करने की चाह के बिना कर्म पर क्यों नहीं ध्यान देते हो? क्यों तुम ऐसा नहीं करते हो? मैंने शंभू से प्रश्न किया, तो शंभू क्या मैं उस लक्ष्य को छोड़ दूं? शंभू ने कहा, नहीं, तुम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल कर्म पे ध्यान दो और उस कर्म में ही, जैसे मैंने पहले ही कहा, कर्म में ही आनंद है, लक्ष्य में कोई आनंद नहीं. धन्यवाद. Ma'am, because through these sessions, I finally realized purpose of life, what is all is about. I finally got my answer through the love bath. I am very grateful to all of you. Thank you, ma'am. Some of you must be thinking that it's efforts of teachers and the speakers, but they have main role in all of things. But I would want to pay thanks to the staff member and the bhaiyas which are always standing there. I have seen the cameramans. We are all sitting relaxing, but they continue to do work, clicking pictures for just something that we like, for just something that schools want. And they don't like take rest or do something. And Bhaiya Didi outside, they like, we are every time inside AC, fan, but them in that, if we have to go to the bathroom also, we think like AC se kya bahar jana. But continuously day and night they are sitting outside and just waiting for us.